Can I come back to you, Mr. Allen? Can I come back to you? I request both Ambassador and Mr. Allen to stay on. Let's listen into what the Prime Minister had to say on specific things. For example, he highlighted the benefits of the double contribution convention that was also agreed within the FTA deal. Prime Minister Modi said that the trade deal will significantly boost employment opportunities for people of both nations. इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। Well, the Prime Minister also said that India and the UK have continued to share views on peace and stability in the Indo-Pacific, the ongoing conflict in Ukraine and the situation in West Asia. The Prime Minister thanked his UK counterpart for strongly condemning the Pahalgam terror attack. पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। And after signing the trade deal, the UK Prime Minister Keir Starmer said that the deal will bring huge benefits to both countries, boosting wages, raising living standards and putting more money in the pockets of the working people. The deal that will bring huge benefits to both of our countries, boosting wages, raising living standards and putting more money in the pockets of working people. It is good for jobs, it is good for business, cutting tariffs and making trade cheaper, quicker and easier. And Prime Minister Starmer also said that the FTA with India is the biggest, most economically significant trade deal that the UK has signed since leaving the EU. This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line.